क्या हो गया भाई? स्टूडियो छोड़ दिया? आप बैक स्टेज कर दिए थे मुझे। क्या हो गया था? बैक स्टेज हो गया था, पता नहीं कैसे। अच्छा। हाँ, मैंने अभी एक्चुअली लाइव किया। मैं पहले लाइव करना भूल गया था। अगर लाइव नहीं किया ना तो अपना स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। अब भी जस्ट लाइव हुआ है। तो फिर अच्छा से एक अच्छा। बार मैं ये कर लेता हूँ, फटाफट बोल देता हूँ जो पास्ट पहले वाला था वो। ओके। तो केनिया जो था वो 1994 आईसीसी ट्रॉफी में उन्होंने पार्ट लिया था। और वो नंबर 2 आए थे वो टूर्नामेंट में। और यूएई जो था वो चैंपियंस था। ओके। तो ये दोनों टीम्स आगे क्वालिफाई हो गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। These were the two new teams who qualified for the World Cup. समझा? यूई एंड इन। केनिया। और उस ओके उसके पहले उन लोग ईस्ट अफ्रीका नाम की टीम से खेलते थे। मतलब उसमें ओके। केनिया, तंजानिया, उगांडा, वो उस कंट्रीज के प्लेयर आते थे उसके अंदर। मतलब अच्छा साउथ अफ्रीका को छोड़ के, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़ के बाकी जो अफ्रीकन अफ्रीकन जो है ना कंट्रीज, 3-4 कंट्रीज खेलते थे वो टाइम पे। तो अच्छा। वो लोग ईस्ट अफ्रीका के नाम से खेलते थे वो टाइम पे। समझा? सही है। तो ऐसा था। और केनिया जब वो लोग क्वालिफाई हुए, वो लोग देख कौन से ग्रुप में थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ थे, इंडिया के साथ थे, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। और वो टाइम पे ये जिम्बाब्वे भी मतलब समझ ले बहुत खतरनाक टीम था वो टाइम पे। और पहला मैच तो इंडिया से लोग हार गए। वो तो है, जो हाँ। मतलब जो मतलब होना ही था, क्योंकि कोई भी टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेलेगा तो उनके साथ ऐसा ऐसा तो होता ही है कि नहीं? अभी इंडिया भी अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर जाएगा खेलने के लिए तो एक आध मैच तो इंडिया को भी बहुत टफ जाएगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, समझने को नर्वस होंगे ना टीम। आई थिंक ऑफलाइन हो गई। आई थिंक स्ट्रीम में कुछ इशू हो रहा है इसको। आई थिंक थोड़ा स्ट्रीम में इशू है इसको, आई थिंक। कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं तब तक। विल जस्ट वेट अंटिल ही गेट्स बैक अप। या ओके सो पता नहीं क्या इशू हो रहा है इसको। सो गाइस दैट टाइम वेस्ट इंडीज का टीम तो बहुत ही जबरदस्त टीम था। रिची रिचर्डसन कैप्टन था वेस्ट इंडीज का। ओके। क्या हुआ भाई? इंटरनेट इश्यूज? नहीं, वाईफाई पे हुआ है, आपके तो वहां से प्रॉब्लम है क्या? उधर से इशू नहीं? नहीं, मेरे साइड से तो मेरा तो बराबर एकदम। तेरा कभी कभी अटकता है बीच बीच में। मेरा भी है बराबर है, वाईफाई सही नहीं बराबर। अच्छा। वाईफाई पूरा पॉइंट फुल दिखा है। ओके। Anyways, ओके। since we are going to the second game of the Kenyan team, ओके। अभी जब तो सेकंड मैच में तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था कि केन्या ने एकदम बिलो पर स्कोर बनाया था। 160 रन बनाया था, 166। और सही। उस मैच के बाद तो सबको लग गया हाफ टाइम पे, यार ये केन्या को वर्ल्ड कप में लेके बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया करके। हाँ दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द कंपटीशन, ऐसे सबको लगने लग हाँ। गया था। बट but when they everyone was when surprised in the end with the result. The underdogs yes. just smashed the world champions. I won't say world champions, but the contenders to win the World Cup. They were seen as one of the Correct. favorites. Okay. उस वर्ल्ड कप के पहले चार टीम को बोल रहे थे फेवरेट से। इंडिया को बोल रहे थे, श्रीलंका को बोल रहे थे,
पाकिस्तान को बोल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और इसको वेस्ट इंडीज को, ये 5 टीम से, मतलब जो बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप अच्छा। जीतने के लिए फेवरेट्स है, क्योंकि वो 3 टीम्स तो अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, समझा। और ऑस्ट्रेलिया जो है उनका टीम बहुत अच्छा था, स्पिन भी था, स्पिन अच्छा था, शेन वॉर्न था, माइकल बेवन था, ब्रैड हॉक था। हाँ। और वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, मतलब लास्ट थे वो लोग, ये जो टीम है 1970s का लास्ट टीम था, मतलब उसके उसके कुछ प्लेयर्स बाकी थे ये टीम में 1990s 96 के वर्ल्ड कप में, समझा। बैकग्राउंड में नॉइस क्या है? नहीं नहीं, अभी बराबर है तेरा। अब लग रहा है कि अपन एकदम प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग करे, ऐसा लग रहा है, सब बिना नॉइस के ओके। एकदम बराबर, पॉइंट्स टू पॉइंट्स एकदम सही लग रहा है एकदम। हम्म। सो नाउ, अभी हम बात करते इनके ओडीआई स्टेटस के बारे में, कब इनको वनडे खेलने का स्टेटस मिला। आईसीसी के हर टीम को ना स्टेटस देता है वनडे खेलने का। अच्छा। तो आईसीसी ने इनको स्टेटस दिया था उस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करने के बाद, बिकॉज उन लोगों ने वेस्ट इंडीज को हराया था। हम्म। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से तो हार गए, लेकिन एक मैच भी जीतना उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो तो है। तो फिर वो एक मैच जीत के वो लोग ने बहुत, मतलब एक बहुत बड़ा ईयर, मतलब क्या बोलते हैं, एक हिस्टोरिक पॉइंट था उन लोगों के लिए, अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर देम। ऑब्वियसली वो लोग थोड़े इनकंसिस्टेंट थे, दे आर नॉट एज कंसिस्टेंट एज सम ऑफ द अदर साइड्स, ओके। समझा। राइट राइट। हाँ कंसिस्टेंसी का समझा। थोड़ा था इशू उन लोगों को, थोड़ा इशू था उन लोगों को कंसिस्टेंसी में, बट स्टिल दे वर लाइक, ऐसा नहीं था कि मतलब इन लोग का मैच है तो अपन ऐसे ही बोल देंगे, नहीं यार ये मैच तो गया, मतलब कंपटीशन तो था, मतलब देखने के लिए उनके मैचेस में, समझा। इट वॉज नॉट लाइक कि एक टीम आएगा, सही। मारेगा 300 400 और दूसरा टीम हार जाएगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट, दे गेव tremendous competition in all the matches except 1 or 2 matches which can happen to a new side which is coming to the World Cup, because our team plays like 50 to 60 matches in a year, and their team plays राइट। only like 10 to 15 matches in 4 years, so they are playing way less cricket than us, so they राइट। are less exposed to pressure, and also quality players. The exposure to quality players is quite less as compared to other countries. I mean, the major playing countries. Yeah, that's right. So that was the point of Kenya. And one more thing, Kenya played a quadrangular tournament, a 4-team tournament in 1998. And guess what? They upset India in that tournament. Which tournament? It was a 4-nation tournament, quadrangular. I think it was known as Coca-Cola Cup. I think something like that. Like how it Coca-Cola happened Cup. I think. between Australia and Sri Lanka, like that. Yeah, something like that. But I think this tournament had India, Kenya, South Africa, and one more team. I'm not able to remember it right now. But it had 4 teams, and I think Kenya played fantastic cricket in this match. Oh, Just look at the score. They only lost 5 wickets, I can see that. Yeah. and they scored The 265 runs. score was 265. Yes, It was and above par score at that time. look at that. Their off spinner has taken 3 wickets in 4 overs. Yeah. As you can see, they were not afraid of playing the big teams. That's what I like. I don't care about whether they win or lose. I like the attitude that they are not afraid of playing big teams. Mm-hmm. That's the kind of That's right. attitude which you want to see in the team. That's right. So that's what I think it was a strong point for me. And they also competed in the Commonwealth Games in 1998, which did not go too well for them.
After that, they also took part in the 1999 World Cup, where they were beaten by India. Yeah, this is the. I'm so sorry. This was the 2001 tournament. This was a tri series. Okay. Here once again you can see Kenya has beaten India. Can you see Yeah, that? they have, yeah. Yes. Hello. Which tournament was this? I think this was the tri series between India, Kenya, and South Africa. Just imagine, Kenya had the privilege of playing India and South Africa. Hmm. So you could guess as to how strong a team Kenya was at that point. That they're getting to play a three-nation tournament with them being the third team. And they also beat India. Look at the margin. They beat India comprehensively by 70 runs. So this shows that That's they're great. not afraid of India at all. That's absolutely great. Even in the 2003 World Cup, which we will discuss after this, even in that also, they gave a really heartbreaking moments for India also. I still remember Saurav Ganguly was very very angry in that match in the World Cup because he thought one mistake and Kenya could take the game away. Okay. I mean, he was really really angry. I mean, he made a century. In the end, India won the game easily. Hmm. But there was a point where it felt like India could also lose this game if they're not careful. Okay. So now we'll just come to that game because I think that was a great game. See, this is the 2003 World Cup which I was talking about, Okay. and I think I have sent the highlights of this to you as well in WhatsApp. Yeah, yeah, I saw that. Yes. Yeah. So as you can see, even here also, they scored about 210 runs, which is not a big score. Just a second, please. एक मिनट. हाँ, बोलिए, बोलता हूँ. Yeah. Continue. So as you can see, 210 was not a par score for them. I think we have lost him again. Hello. Hello, hello, Yeah, yeah. hello. सुनने आ रहा है, audible. So as I was discussing, 210 wasn't such a par score on that ground. But look Yes. where the match is. But look where the match is. Just look at the venue. It's in Nairobi in Kenya. They are playing at home ground. And Yes. there was a really famous dialogue in that match, which I can still remember. I think Which was that? you would also heard it if you would have watched the highlights that the commentator tells, and that's it, it's over, it's all over here in Nairobi. The Kenyans have beaten the Sri Lankans. Maurice Odumbe takes the last wicket to fall. When he caught the last catch that time, right? Yes, that last wicket, that bowler of Sri Lanka who tried to play the reverse sweep and he got bowled. Yes, yes. So I think that moment, I think it's still in my again. I mean, it still feels like it happened yesterday. I mean, it was such a moment in the game. I don't think this would happen ever again. I don't know Kenya would ever beat against Sri Lanka or not. I think it was one of the moments. I mean, one of the rarest moments, I would say. I mean, Yeah, if you are a yes. cricket fan, if you are a cricket fan, then that thing is a must. You should definitely watch that highlights. It's not big. It's only like Yeah, 3 to 4.
No, I've So watched it already. I watched it. yeah, that's what I'm telling. I mean, to anyone who is a genuine fan, I'm just Hmm. telling as a general, anyone Okay. who's a genuine fan of cricket, he should definitely watch this match. Then he would know the spirit that the weak countries play with. It's not like they're just coming and just getting hammered. Even they want to play well. Hmm. And just look at the Yeah. happiness. When we win, it's like okay, we have won. But look at them, it's like a winning a World Cup for them, beating a big team. Yes. So that was one of the strong points of Kenya. And in this World Cup, they continued to play good games. But at the end of the day, they had to lose. I mean, कब तक चलता? They tried their हाँ वो best. भी They beat Bangladesh and qualified for the Super Six. Then they beat Zimbabwe and qualified for the semi-finals as well, which is but like then a huge effort. what happened in match versus India? Yeah, that match was India, which I was talking about. What happened was they scored about 225 runs, 225. And Okay. for your reference, I would just put up the match for you so that you can easily get what I'm talking about. I no, this wasn't that match. This is the semi-final. I think they played twice. They played twice at the World Cup. I'll just get you the Super Six match. See, this was the Super Six match which they played. Okay. And if you can see in the scorecard itself, Kenya scored 225 for 6 Yes. and India scored 226 for 4. Even though it seems like India had won easily, even though it seems that India won very easily. But if you look at the fall of wickets for India, you would know what I was talking about. Just look here. First wicket fell at 5 runs. Okay. Second wicket fell at 11. Then at 24. India were 24 for 3 at one stage after like 9 overs. Okay, so at Okay. that point, India was really struggling. And look at Kenya's bowlers. 10 overs for 27, 7 over for 27. They were bowling tremendously. But Very good. the strong point was India played their spinners very well. So they dominated the spin of India. Sorry, of Kenya. Okay. Yeah. That's why they were able to chase. If Kenya had one more good fast bowler in that team, I mean, they had two, but if they had one more for support, I think this match could have been even tougher for India. I think once again he's gone. Yes. So that's it for Kenyan team. I mean, after that, after this World Cup, I mean, they just lost it a bit. ICC didn't support them enough, and we just lost that fantastic Kenyan team forever. It feels really unfortunate as a fan. I mean, as a fan, we want to see as many good teams as possible, right? Are you able to hear me? What's happening, mate? I think he's just having some issues with the stream. It can happen, no issues. It can happen. So, as we were discussing on the stream,
So as I was discussing, they had a tremendous decline after that World Cup. Yes, even in They were not able. 2007 they could not perform very well. In 2007, they had qualified, but they only were able to win one game, and they were not that great at that World Cup, to be honest. Yes, yes, It was like just they had played well in 2003, so ICC just gave them a chance, but they just lost their sting. I mean, they were not as tough as they were in 2003. no, that's for sure. So, because of which, I think we lost a very great side in world cricket. Otherwise, it would have been really fun to see more African teams like South Africa is already there. If Zimbabwe and Hmm. Kenya were there, then it would have been really good. I mean, like two, three teams from that continent as well. It would have been great Yes, because now, if you can see, all the new teams are coming from Asia only. yes, Previously, they used to come from Africa, Europe. There were a lot of teams from other continents as well. You won't you won't believe in 2004 Champions Trophy. Even America played in that Champions Trophy. oh, They really, lost badly though. They lost badly, but they did take part in that game. Against they that played, I think they played I think two matches in that Champions Trophy, and they lost both see, the matches by over 200 runs. participation is more important, right? Yeah, yeah. That's what I'm telling. At least it was a stepping stone for them. But unfortunately, ICC did not support them enough. Yes, So that's why it happened because ICC wants to see improvement fast. But as we know, cricket is such a game that even India, after so much of experience, even still we are afraid of playing overseas, some because of losing and all that stuff. So just imagine yes, about yes. these. So See, now we even move now, on to the now. Okay, yeah, continue. as I see, even now, after having such a strong team, we are getting affected just by because of missing one player. We are afraid Yeah, of getting affected. Yeah, so cricket is not a game that we can improve drastically. that's what I You know feel that bad about. affect. Because a country like India, where cricket is like a religion, I mean to say that we love cricket so much. Yes, Why are we just depending on one or two players? I mean, if we are such a country that at any slot, opening, yes, middle order, lower middle order, tail ender, we should have at least 4 or 5 backups for every spot. yes, yes, of course. We should at least have 44 players who can directly make the playing 11. Right. For every slot, if you take four players, four openers, okay, four middle order batsmen, four tailenders, four bowlers. So it should be 44 players who should be immediately be good enough to take the field because of our Okay. domination. But unfortunately, we are not able to do that. I don't know why. That really baffles me, to be honest. Yes, that's all But out of this some lack of confidence, and I think corruption has occurred in cricket too. I think. What's your opinion? But in still, I think due to IPL, I think we are getting on the right track though. I think IPL is a big positive because we got to see Tewatia, we got to see Bishnoi, we got to see Surya Kumar, we got to see Ishan Kishan. So I think we got the opportunity to see other stars apart from the main international players. That is the big Yes, positive that I can take at this point from the IPL. That we yes, are able to see other stars. So now we move on to the next team. This team was my favorite team before Bangladesh. I mean, this I used to follow this team after India. I think this team was Zimbabwe. The reason being they always had those players who were like, "Come on, let's do it. We are here for a fight." They were like that team. They were not Kenya. They were much superior team to Kenya. okay, And you won't believe they have beaten India 10 times in ODIs. And they also beaten Australia twice, South Africa twice, Pakistan thrice, Sri Lanka 11 times.
in ODIs. Oh, They have also beaten Bangladesh. So I'll just quickly take you through the stats of Zimbabwe. Okay. yeah, Then yeah. we'll take the discussion forward from there. See, this is their logo. It's like a bird, you know. It looks like a bird. Yes. So we'll just quickly go. And actually, the coach of Zimbabwe is an Indian coach. He is Lalchan Rajput, who was the coach of India in the famous 2007 World T20, which India won. Oh, So he is currently the coach of okay. Zimbabwe, and he believes Zimbabwe has a great chance to once again become a good team because they are a test playing nation, man. They are a test playing nation. You know what that Yeah. means to play test match. Zimbabwe is a test playing nation. But unfortunately, look at the rank. They are currently ranked 11 in test matches, 11 in ODIs, and 12 in T20, unfortunately. They are not getting enough matches, I guess. Yeah. But recently, they had tied a super over and won against Pakistan in an ODI, Hmm. if you can remember. I even shared the scores with you on WhatsApp, if you remember. So I think they have really, I mean, they're getting on the right track. I won't say that they are back to their best, which they were previously, They're but gradually I'm, getting. I'm hopeful that they're at least going on the right path. Yes. Because I don't want Indian team to always think Zimbabwe weak, Bangladesh weak, Sri Lanka weak. That would really take the charm of cricket. Because if we always play, or always we think like we have to play Australia, we have to play England, we have to play New Zealand, then what? What is the use? We only have like 3 to 4 teams. This is Yes. really killing cricket, man. This is really killing cricket. Yes. Yes. Previously, The we used to more have eight to nine competition, teams. more the fun it is. At least if you're not able to compete in other formats, at least try to compete in T20 format. Try to play T20 series with every country as much as possible and remove the ODIs. Just play ODIs with the big teams. Simple as that. I think once again we have lost the stream. क्या हो रहा है भाई? आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है. I don't know, man. I'm on Wi-Fi, but I don't know why. What's the problem? So Shoaib is like a visitor who's coming and going and coming and going. He's always taking a tea break and a potty break and a bathroom break. You cannot leave the meeting, mate, in the middle. You gotta be strict. You gotta follow the rules, mate. I'm not leaving later. I don't know. There is some Yeah, yeah. errors in Wi-Fi. Please excuse for that. And I also want to tell you one more fact about Zimbabwe. I think we have lost him again. What the hell? Am I audible? What's happening, mate? Am I audible? Why are we losing again? Why are we losing you again and again, man? Am I in now? Just try to get the Hello? act together, mate. Just try to get the act together. Yeah, yeah, I can listen. Okay. So I was telling you that there is a pretty interesting fact about Zimbabwe in the World Cups, which is Okay. whenever Zimbabwe has beaten Australia in a World Cup, India has gone on to win that World Cup. Oh. In So in 2000, 1983, in in 1983, 2011, Zimbabwe. yeah, yeah, no, no, not in 2011. What I'm trying to tell you is, uh, when India played the 1983 World Cup, that time Zimbabwe just had played their first ever World Cup match, first ever.
Okay. against Australia, Hmm. and they beat Australia in their first ever match. First ever match itself. Yes, it was the debut match in international cricket, and they beat Australia. Just imagine, you are going for a debut and you're beating Australia. That's And that's great. India, and even when they are playing India, India were 17 for 5 Oh, against Zimbabwe. But fortunately for then us, who saved them? our captain, our captain Kapil Dev played a fantastic innings of 175 and saved us from a defeat. Oh, great. And who supported it? I don't know the exact scorecard though, but I feel some, I think Mohinder Amara or someone. I mean, an all-rounder was there. That much I've heard. Because there is no video of that match, because that day BBC had strike, so that there is no telecast available in the whole world. The match is not Okay. telecasted at all. Okay. So that was a moment. And even in the 2007 World T20, when Zimbabwe played their first ever T20 against Australia, again they beat Australia. And again India went on to win that World T20 in 2007. So you Hmm. can see, Great. whenever Zimbabwe is beating Australia, India is winning. But in 2011, it was not the first match for Zimbabwe. Remember that. Zimbabwe had Okay. already played. So it only works when Zimbabwe are making a debut in that particular format. It only works then. Oh, okay. So two times it So has worked for India. Zimbabwe. And as you can see, in 1992 to 1996, these were the early years of Zimbabwe in Test cricket. Okay, and Okay. then started their golden era. And see, in their first in their first match, look at their test match score: 544 for 4 declared against Pakistan. Oh, great man. In just They just 265 overs. Yes, and look, Pakistan were all out in both innings. Zimbabwe only one innings was enough for them to defeat Pakistan. What a score that was, man. And just they lost only 4 wickets. Only four. Yes, and they lost 20 wickets, and still they could not score. They were still 64 runs short of Zimbabwe's first innings Even score. India, when they played 176 overs against Australia, they lost 7 wickets. Yeah, yeah. But I'm comparing Zimbabwe, who are just playing their first one day. I mean, first test. I mean, Yeah, just compare. that's what I'm saying. That's what I'm saying. India, after having such an experience, Yeah, also they yeah. could not be at. Hmm, What happened was Zimbabwe actually was a very good team earlier. They had a pretty good structure. I mean, Zimbabwe was like top 5 to 6 teams. okay. I had previously mentioned to you as well that Zimbabwe was like a top 5 or 6 teams in the world at that point in time. They were Hmm. not like, come on, just we'll be just beaten. No, they beat you. They beat you badly. They would come and beat you. They were not Uh, like, come, come, look at just their beat guy. us. Look at their They're like, great flower. yeah, Look at it, their it's grand flower. He played more than 90 overs, right? More than 90 overs he played. yeah, yeah. Great And now. this was their first Test match victory. But unfortunately, they lost that Test series. Still, I mean, Pakistan made a comeback up and they won the next two Test matches. But it's still a very good thing for Zimbabwe because winning a Test match is the most difficult thing in the whole world of sport. It's the most difficult game to win because one day in T20 you can still win with the help of one or two batsmen or one or two bowlers. But Test match, it's a really, really tough format, man. If you don't have a good team, it's very, very difficult to win. लोग बोलते हैं ना, अगर तेरा टीम बेकार है तो टेस्ट मैच में मालूम पड़ जाएगा तेरा टीम कितना अच्छा है करके. Yeah. If Indian team is really good, you would know in the test matches against Australia whether they are able to win or not. Because we are saying right that India is a good team. India is a good team. Let them prove it by winning test matches, right? Yeah. If they're And able to win the without test that, match, it will improve, right? yeah,
and that too without their one or two players. And now, if we look at the golden era of Zimbabwe, golden era, that is from 1997 to 2002. These 5 years, Zimbabwe won against every country in the world who plays cricket. They won against every country. Okay, So, first, we will just look at the point of view of World Cup, that is 1999 World Cup. Okay, and see this Zimbabwe beats South Africa. And at that time, South Africa was known as the only team who can beat Australia in World Cup, you know. oh, And okay, that South African team was defeated by Zimbabwe. So you can see how tough Zimbabwe was at that point. They beat the number two ranked team in ODS at that point. great, great. And look at this guy, Neil Johnson. He was the highest run scorer in their batting innings, and he was also the highest wicket taker in their bowling innings. Can you imagine? Highest you take highest wickets in batting also, sorry, highest runs in batting also, and highest wickets in bowling also. I mean, that's called all rounder, man. That's called all rounder. Where are those all That's rounders correct. nowadays? That's Where are those correct, all? of course. Previously, Sachin also used to do that. Sachin also used to do that. He used to score 100 runs and also take 3 4 wickets. Sure. But nowadays we are not able to see those kind of all rounders anymore. So if we There, go there down the are list some, but rarely. and look, they also mentioned here that Zimbabwe beat all the test playing nations except Australia. Okay. Zimbabwe were able to beat New Zealand both home and away in 2000 and 2001. The team also reached the finals of many multinational one-day tournaments. I mean, what they're trying to tell is that Zimbabwe played many triangular series, triangular series and quadrangular series, and they managed to reach the finals of that tournament as well, which shows that they were consistent enough. Okay. So I think that was pretty much what Zimbabwe used to do, and this was something which really destroyed Zimbabwe. As you can see, the topic it says signs of decline. Yes. Because look how many players opted out. These were the number of players from here. These were the number of players that opted out. They said that we won't play for Zimbabwe again because of Why? some political issues from the government, due to which they were forced to leave the Zimbabwe team. But I think Masakaja played after that. Masakaja and Chugumura Masakadza still they played, played after that also. Masakadza has played, Prosper Utse has played, and Tatenda Taibu has played. 3 4 players have played, but at that point, I Chugumura mean, like also. 3 4 years, they really did not play any games. Okay. So that was something which really hampered Zimbabwe. I Okay. mean, Zimbabwe really was what do you call that? It really went downhill from there, a downward slope. They hit really badly. Mhm. Now, since we have discussed about the two teams, you might have observed one thing that whenever they have dominated, something has happened that really has declined, that really has disturbed their progress with both the teams, Yes. Zimbabwe also and Kenya also. And now we are seeing that signs with Sri Lanka also and West Indies also. वेस्ट इंडीज से तो बहुत पहले ही अपने को मालूम पड़ गया उन लोग का डिक्लाइन चालू हो गया करके वो लोग तो T20 में अच्छे थे But yeah, but look at the consistency. They are like we cannot predict easily. because West Indies was the They most can do consistent test anytime, at one point they anything, were the most anytime. consistent. यार क्या ये छूटेगिरी So I was saying that.
West Indies Hmm. is like they are unpredictable even now. You can't say at which instant of time what will they do. Hmm. और इस सीरीज में एक और रिकॉर्ड भी हुआ। मैथ्यू हेडन, एक सीरीज हुआ था 2003 में, जिम्बाब्वे टूर Hmm. ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसमें मैथ्यू हेडन भाई इतना भड़क गए, इतना भड़क गए, इतना भड़क गए, Uh, 380 रन बना दिया भाई ने ओपनिंग करते हुए। मतलब उस मैच में जिम्बाब्वे बस आया था, बॉल डाल रहा था, हेडन मार रहा था, वो आया बॉल डाला, हेडन मार रहा था, आया बॉल डाला, हेडन पार कर रहा था। इट वाज लाइक आ बेल मुझे मार, एंड ही स्कोर्ड लाइक 380 एंड ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड लाइक 750 और रन्स फॉर 3 विकेट्स। for just 3 wickets. सो यू कैन जस्ट इमेजिन जिम्बाब्वे में क्या बीत रहा होगा उस समय, एंड दैट टाइम ऑस्ट्रेलिया वाज रियली एट द पीक। 1999 में तो अच्छा टीम बन बन गया था, लेकिन 2003 में तो सबको मार डाला उन्होंने। नो वन कुड इवन compete अगेंस्ट दैट ऑस्ट्रेलियन टीम। If you know that you had a match against Australia, you would say, "चलो भाई गया सीरीज तो गया हाथ से." It was like that. बस जाके एक मैच जीत जाओ। It was like that in those moments. I still remember And when we used to win one match, even one match against Australia. That time people used to celebrate. Yes, we won against Australia. Yes, we won against Australia. Even that one match, it was like that at those moments, at that point. मतलब एक मैच भी अगर जीत गए इंडिया, it was like, oh my God, we have made such a big achievement. We have really won a World Cup. It was like that. So now moving on to our next team, which is Asian teams. Now we'll take some Asian teams and then we'll move to the West Indies. So now I'll quickly take you through the Sri Lankan team. Okay, we'll quickly move on to the Sri Lankan team now. And Sri yes, Lanka now actually we don't rate them much higher at this moment, but I previously they think were their really. decline started after 2011 or 15, you can say. I Their think after decline started. 2015 when Malinga went, Sangakkara went, Dilshan went, Jayawardene went, these four guys went at the same time. It really created a big hole for their team. Yes. Like for example, if you see India, when Zair Khan went, we had Shami. When Ashish went, we had Bumrah. I mean, we had like good replacements for that kind of Yeah, but bowling. The only in replacement we test, could not. Yes, continue. but in test matches, we also had the same situation like Sri Lanka. Lakshman left and Dravid left as Sachin. They all left simultaneously. Yeah, in 2011 to 2014, we were rebuilding. Those 3 years were really tough for India in Test cricket. Yeah. Yes. That's why losing against England really hurt us in 2012 when we lost against England. It really Yeah, hurt us bro. bad because if you are rebuilding, you want to make sure that at least at home you don't lose, right? You Yes. have to make sure that at least at home you're maintaining a good win percentage. Yeah. So I think that was a big, I mean, what do you call, a big disappointing day for me as a fan, as a cricket fan, seeing India lose in India. I mean, it doesn't happen too often. It's very rare. I mean, it's a Yeah. rare occurrence. And as you can see, this is Sri Lanka, the team which was a very, very exciting team in World Cups. Oh man, he's gone again. Some serious internet issues there. So as you can Yeah. see, So Sri Lanka were awarded the Test status in 1981. Hello.
Sorry for the disturbance. Yeah, yeah. So as you can see, Sri Lanka were awarded the Test status in 1981. Okay. Just a moment. Yeah, I think I'm facing. Yeah, okay. So previously, before acquiring the Test status, they were they took part in the 1979 World Cup as well. It was their first World Cup for Sri Lanka, Okay. and they won a World Cup within 17 years of their admission. Within 17 years in 1996, if you can remember. Okay. That is great. And they are only one of the two teams. Only two times Australia has lost the World Cup finals, and one was against West Indies and one was against Sri Lanka. Yeah. So they have one of the rarest achievement, which I think no one has. India had a chance in 2003, but we missed it. Yeah, really. The chance to beat Australia, and Sri Lanka had it in 1996, but Australia took that revenge in 2007. I mean, Gilly was on the mood on that day. He single-handedly smashed Australia. I still remember Gilly had a Scotch ball in his gloves. He was like signaling like this in his gloves, like he was showing the Scotch ball like this. That this was the reason. Something he showed like this. I still remember that innings. I mean, थोड़ा बारिश हो गया था तभी स्टार्टिंग में शुरुआत में तो Uh, रेन रेन की वजह से थोड़ा कम ओवर्स का मैच हो गया था कुछ 38 या 40 ओवर्स का मैच था तभी okay. तो फिर कौन गिली जीता दोनों गिली श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया? व्हाट हैपेंड Who won then? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया? दैट 2007 match final was won by Australia. That was when they made a hat trick, winning three World Cups consecutively. Okay. Okay. And why I say winning three World Cup consecutively is hard because it happens every 4 years. And to have a great side consecutively for four years, it's not easy because every 4 year the team will change, right? Of course. And to still maintain that level even after 4 years. I mean, if you look at India in 2011, the team just compare that team to 2015. There are many players who are not there in 2015 World Cup. For example, Yuvraj was not there, Gambhir was not there, Zaire was not there, Sehwag Yes. was not there, Sachin was not there, Bhaji was not there. We missed many players, man. We missed many legends. Nehra was not there. Yes. So it's very difficult to maintain that same team for the next 4 years. But Australia maintained that level of dominance even with changes in the team for 12 years. That is three World Cups. Okay. That is something which I find really astonishing. What are your views on that? So, like for 12 years, they were maintained. They were consistent for 12 years. Yes, you can So, talk Hindi a bit because we are Indians at the uh, end of the day. and I know, Some Hindi would be बोलो good. मतलब वो लोग हाँ 12 साल के लिए वो लोग कंसिस्टेंट थे इतना, बहुत बड़ी बात है. हाँ और हमेशा 4 साल के बाद तो टीम चेंज चेंज होता ही है हर कंट्री का बट उन लोग ने खाली उतने ही चेंजेस किए जितने जरूरी थे समझा इसके लिए वो लोग डोमिनेट कर पाए हेलो. हेलो हेलो यस यस आई एम एबल टू हियर यू वो बोला था मतलब कितना 12 इयर्स के लिए इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात. फिर क्या और कोई भी टीम लगातार 12 साल आई मीन चेंजेस तो होगा टीम में समझा चेंजेस तो होगा हर टीम में 4 4 साल में लेकिन उन लोग सिर्फ उतना ही चेंजेस करते थे जो उनको लगता था कि कमजोर हो गए समझा हाँ. अभी तो 2003 का टीम कंपेयर करेगा ऑस्ट्रेलिया का उसमें बेवन था फिनिशर की तरह 2003 में बेवन था हार्वी था जो आगे ऑलराउंडर थे उनके टीम में उनको मालूम पड़ गया कि ये अगला वर्ल्ड कप खेलने नहीं वाले तो उन लोग ने
किसको फाइंड किया? शेन वॉटसन, Okay. समझा, माइकल क्लार्क, समझा। ये दो बैट्समैन को रिप्लेस करने के लिए वो लोग ने दो अच्छे बैट्समैन को फाइंड कर लिया था अगले 4 साल के अंदर ही, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया बाकी लोग एक और वर्ल्ड कप खेलने वाले, सिर्फ यही दो स्लॉट है जो खाली होने वाला है 4 साल के अंदर। तो वो लोग ने वो दोनों प्लेयर को ग्रूम करते 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 4 साल में बराबर जिस जगह में खाली हुआ उस जगह में ये लोग को भर दिया, Hmm. समझा। पर So, इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये मेरे को समझ नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया का विजन इतना खतरनाक रहता है, उन लोग एग्जैक्टली मालूम रहता है कि 4 साल में किधर हम लोग को वीकनेस आने वाला है, एग्जैक्टली उधर उन लोग एक नया प्लेयर को क्या बोलते हैं उसको, उन लोग उसको प्रिपेयर करने में वो लोग लग जाते हैं। बट इंडिया वैसा कर नहीं पाता। This is- right. You're taking too much bathroom, mate. क्या भाई दोबारा अटक गया तू? अटकने का Yeah. नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। Now I अटकने will का be नया consistent. अटकने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ये भी। फिर अभी consistent तो भाई चला अभी वो डेटा पे आ गया। ओके, सो जैसा कि श्रीलंका का जर्नी है इसमें देख क्या लिखा है। श्रीलंका का सक्सेस जो है वो आके लेट 90s में स्टार्ट हुआ, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द 1990s में स्टार्ट हुआ, समझा। Okay. उनको पहले लोग अंडरडॉग मानते थे, अंडरडॉग श्रीलंका को। अच्छा। अंडरडॉग होने के बावजूद वो लोग 17 साल के अंदर ही वो लोग ने अपना पहला वर्ल्ड कप मार लिया। दे वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप विद इन लाइक 17 years ऑफ एडमिशन टू वर्ल्ड क्रिकेट, एडमिशन, मतलब वो लोग जस्ट Okay. वर्ल्ड क्रिकेट क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए। जैसे इंडिया ने 1932 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, श्रीलंका ने 1979 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। Okay. और उसके 17 साल के अंदर ही वो लोग जीत गए। इंडिया को पहला टेस्ट मैच जीतने को 20 साल लगे, Oh. समझा। तो इंडिया का स्ट्रगल बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा लंबा था। यहाँ तक इंडिया पहुंचने के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल है बेटा, इतना आसान नहीं था। Okay. वी आर बहुत एंजॉइंग लगा। लाइक वी आर एंजॉइंग द टीम नाउ, बट इट हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल previously, Okay. and we always had something or the other lacking in our team. Just recently Yeah. we have got a balanced team, वरना हमेशा हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे थे टीम बैलेंस के लिए। Hmm. और अगर तो देखेगा श्रीलंका 96 वर्ल्ड कप के बाद से ही बहुत ही स्ट्रांग टीम रहा है हर वर्ल्ड कप में। चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल खेला 2002 में, 2003 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में आया, 2007 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में आया, 2011 के वर्ल्ड कप, सॉरी 2007 में तो फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, ओके। 2011 में भी फाइनल खेला इंडिया के साथ, फिर 2009 में भी वर्ल्ड टी20 फाइनल खेला, 2012 में भी वर्ल्ड टी20 फाइनल खेला, एंड फाइनली 2014 में इंडिया को उन्होंने हरा दिया टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में, जिसमें Right. संगकारा और जयवर्धने का लास्ट वर्ल्ड कप था। मैं दिल से सोच रहा था कि वो लोग एक वर्ल्ड कप जीत जाए जाने से पहले, बस क्योंकि वो लोग लगातार 4-5 बार फाइनल में आ गए थे ना। तो मेरे को भी हाँ। दिल से मेरे को भी बुरा लगने लग गया, अरे भाई बस हो गया, बस एक जीत जाओ बस कैसे भी। पांच, इंडिया इंडिया ठीक है, एक फाइनल हार गए ठीक है, ये लोग 5-6 हार रहे भाई, इन लोग को तो ज्यादा ये रहेगा ना, हार्ट ब्रेक रहेगा। तो मैं हाँ। सोचा कि चलो ठीक है, अगर इंडिया जीत नहीं पा रहा तो चल अभी मैच तो गया है, चल अभी इन लोग के लिए एक फेयरवेल मिल गया, तो मैं उसके लिए थोड़ा हैप्पी था। मतलब इंडिया हार गया वो तो अपने को डिसअपॉइंटमेंट था, बट हम्म। स्टिल आई वाज हैप्पी दैट कि इन लोग को एक अच्छा फेयरवेल मिल गया। हाँ वो अच्छा लगा। और इनके टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स था, मतलब ग्रेट्स थे, ग्रेट्स वर्ल्ड क्रिकेट के इनके टीम में। अरविंदर डिसिल्वा, जयसूर्या, संगकारा, राणा डूंगा, सोच राणा डूंगा, राणा डूंगा भाई, द ओनली कैप्टन ऑफ श्रीलंका टू विन अ वर्ल्ड कप। समझ समझ रहा है कितना बड़ा अचीवमेंट है वो भी। हम्म। मतलब कैप्टन, वर्ल्ड कप जीतने वाला कैप्टन का एक अलग ही स्टैचर है। जैसे धोनी को लोग अभी भी क्यों मानते, वर्ल्ड कप विनिंग बिकॉज कैप्टन। यू आर वर्ल्ड कप। यस। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि वर्ल्ड कप में प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है। नॉर्मल सीरीज को पूरा वर्ल्ड नहीं देखता, नॉर्मल सीरीज में उतना प्रेशर नहीं होता, तो देखो जो मारना है तो मार सकता है, उतना पब्लिक का प्रेशर नहीं होता। वर्ल्ड कप में क्या, पब्लिक का प्रेशर बहुत हाई रहता है। और वो भी अपने अपने होम कंट्री का 2011 से पहले अपने होम में कोई भी जीता नहीं था। हाँ, सो आई थिंक वो प्रेशर में खेल के जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, मोर देन विनिंग द वर्ल्ड कप। बड़ा अचीवमेंट ये था कि होम के प्रेशर में जीतना। आई मीन दैट इज समथिंग विच इंडिया वेर नॉट यूज टू प्रीवियसली। प्रीवियसली इंडिया
होम प्रेशर में उतना अच्छा खेल नहीं पाता था प्रीवियसली, सही। बट जस्ट इन रिसेंट टाइम्स दे मैनेज टू डू दैट. But again, after 2013, we are still not able to win any ICC tournament. It's been like 7 long years now. We are still waiting that someday we will win again. We After had a that great champion, chance in 2019 and 19, man. after that Champions Trophy, we have not had the chance to celebrate in cricket by winning any अपने tournament. पास अपने पास 15 19 में चांस था, and we could have given a good farewell to Dhoni too. मेरे हिसाब से 15 का जो टीम था ना, 15 का टीम में वीकनेस क्या था पाने हो गया, बॉलिंग का वीकनेस था एक्चुअली, क्योंकि मेरे को अभी भी Bowling का याद है weakness. के पहले वर्ल्ड कप के पहले इंडिया 4 महीने का टूर के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मैच, वनडे, हाँ, टी20 वगैरह सब खेलने के लिए. और okay. उसमें इंडिया एक भी मैच जीता ही नहीं था वो पूरे टूर में. टेस्ट मैच भी पूरा एक हारा, वनडे भी सब हारा. खाली एक मैच जीता आई थिंक. एक मैच आई थिंक श्रीलंका से जीता, श्रीलंका नहीं था वो टाइम, इंग्लैंड आया था खेलने को. वो टाइम में ट्राई सीरीज में इंग्लैंड आया खेलने को, मतलब 2015 वाले में. और इंडिया एक भी मैच जीत नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली. एक भी मैच जीत नहीं पाया. इंडिया लॉस्ट ऑल द मैचेस ऑन दैट टूर. इंडिया का विन था 0. तो मेरे को मालूम था कि इंडिया इन लोग को हरा देगा, पाकिस्तान को हरा देगा, बांग्लादेश को हरा देगा, ये मेरे को मालूम था माइंड में कि इन लोग को तो हरा देगा वर्ल्ड कप में. मेरा मेन था कि अगर अपने अपन ऐसे, फॉर मी अगर द अपन मेन मैच. 2000 अगर अपन 2019 का जीतते तो एटलीस्ट अपने पास धोनी का अच्छा 19 फेरल वाला मिलता। जो वर्ल्ड कप था, अगर तू देखेगा ना, 19 वाला जो टीम था उसमें अपने पास सब कुछ था एक्सेप्ट नंबर 4, बाकी सब अपने पास बराबर था वो टीम में. Because we had the world's number one batsman, we had the world's number one bowler. अगर अगर तो ऑब्जर्व करेगा ना, अगर धवन को इंजरी ना होता ना, धवन को इंजरी ना होता, केएल राहुल नंबर 4 पे खेलता, धोनी 5 पे खेलता, पांड्या 6 पे खेलता, तभी अपन वर्ल्ड कप जीत जाते भाई. वो वर्ल्ड कप अपना था तभी. बट प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले धवन इंजर्ड हो गया, उधर से उन लोग का पूरा बैलेंस बिगड़ गया. उन लोग का प्लान था कि एक सॉलिड बैट्समैन खेलेगा नंबर 4 पे, टेक्निक वाला, क्योंकि राइडू का उस टाइम पे टेक्निक उतना खास नहीं था. राइडू हमेशा इन स्विंग वगैरह पे आउट हो रहा था बहुत. तो उनको ऐसा फील हुआ कि टेक्निकल बैट्समैन रहेगा तो अच्छा रहेगा नंबर 4 पे. तो उस वक्त उन्होंने केएल हम्म, राहुल को नंबर 4 पे चूज किया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, धवन इंजर्ड हो गया. समझा. तो नहीं, उधर और से अगर इंडिया का अपन वो प्लान. जीत जाते तो धोनी को अच्छा फेरल भी मिलता, जैसे कि हम्म. संगकारा और जयवर्धन को। बराबर. अभी आई थिंक और 7 मिनट अपने बस, आई थिंक टॉस के पहले. तो फटाफट अपन पाकिस्तान को और बांग्लादेश को डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर. फिर अपन ओके, टॉस में जाएंगे थोड़ा. टॉस में 2 मिनट टॉस का अपडेट लेंगे, फिर ऑफिस आएंगे इधर. आई थिंक और 7 मिनट है टॉस के लिए. तो ये था ओके, श्रीलंका का. अगर श्रीलंका का कोई अचीवमेंट्स अगर अपन देखे, अभी अचीवमेंट्स देखते थोड़ा, इन लोगों का जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं ना, रिकॉर्ड्स. नाउ विल हाँ, गो विद रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने लोअर रैंक का मैंने रिकॉर्ड इसलिए चूज नहीं किया, क्योंकि उनका देखेंगे तो अपने को उतना मतलब अपने को रिकॉर्ड तो एक्चुअली मालूम है क्या रिकॉर्ड है उन लोगों का. ऐसे रिकॉर्ड ये हाई टीम्स का है ना. हाँ, एक और चीज इन लोग के बारे में. इन लोग का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर मालूम है कितना है श्रीलंका का? 970 ना कुछ, 900 नाइन कितना था ना, नाइन 952 फॉर 6. 952 अगेंस्ट फॉर इंडिया, 6 अगेंस्ट इंडिया. अगेंस्ट इंडिया। हाँ. और तो इन लोग का अगर दैट विन देखिए ना, ये देख इधर 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 इन लोग का स्टैट है, इधर इधर साइड में एक स्टैट है, देख ये वाला. इफ यू कैन सी दिस, जो मैंने ब्लू में ओके, हाईलाइट किया, दिख रहा है वो? या 852 वनडे खेला वो लोग ने, श्रीलंका ने 852. उसमें से ओके, 389 मैच वो लोग जीते वो लोग, और 421 हारे वो लोग. समझा. ओके, तो इसका इसका मतलब क्या है, ये लोग का टीम अच्छा था, बट गलत मतलब 15 के बाद वो ये जो लॉस है ना, आई थिंक 15 के बाद ज्यादा बढ़ गया, 2015 के बाद. समझ रहे हैं? वरना इन लोग आई थिंक हाँ, वो टॉप 5 टीम्स में थे ये लोग हमेशा ही, वनडे में लोग हमेशा ही वो टॉप 5 टीम्स में थे ये लोग. दे आर नॉट लाइक बहुत ही वर्स्ट. या समझा. और इन लोग का 19 एंड 96 में सबसे बेस्ट था, दैट इज दे वर एबल टू विन द चैंपियनशिप, दैट इज वर्ल्ड कप इन 96. दिस वाज देयर बेस्ट रिजल्ट. And in T20, their best was in 2014 when they managed to win the World Cup. Okay, so यस, that was their best. And Sri Lanka were very good in the World Cup, as I just mentioned, and they also won the Asia Cup 5 times. फाइव टाइम्स, ओके। India had won 6 times. That is the recently which they had won. Remember in 2018 when they won. I think the highest number of times Asia Cup won by India. इंडिया ने एशिया कप 6 बार जीता है, 5 बार श्रीलंका ने जीता है, 2 बार पाकिस्तान ने जीता है.
अभी तक इतना ही स्टैट। बांग्लादेश बांग्ला एक बार आया था फाइनल में, बांग्लादेश लेकिन इंडिया से हार गया। हाँ। And we have completed 1 hour of the streaming, man. We have completed 1 hours in the streaming now, Oh, and good. still we are only talking about the third team. Still, we are only It's talking about the the third long, team. it's our longest streak till now. Yeah, man. And luckily, you had Wi-Fi also, so it really boosted us in this Yes, yes, stream. Because without Wi-Fi, we could not have we would not have been able to show so much of data. I mean, yes, yes. all this data which we are showing right here. Yes. Previously, I had also Buddha. Now I'm actually Buddha due to some personal problems. So I think Sri Lanka were a pretty good side, because whenever Sri Lanka used to play, I mean, previously India Sri Lanka matches were very good to watch. They would play very well. They would use their spin of Murli, Chaminda Dilshan. Yes, All those India. spinners would come and they would really choke us, and we would find very difficult to play. But now Sri Lanka is like I don't want to use that word. Now they have become that team. The word which comes from S and ends with S. This That was one. good one. Good one, Yeah, good one, good one. yeah. SS. So they have become SS now. So Yes, that's something which I didn't expect. I mean, 4 5 years before. Even you might have remembered Sri Lanka as a good team, right? of course, of course. I mean, they were. The, I mean, I mean, I'm really surprised to see West Indies play, Sri Lanka play. I mean, they were like the most exciting teams. India were more like serious team. India were all not exciting. They were very serious team. Even now you see India are yes, like, we want fitness, we want professionalism, we want good technique batsmen. But Sri Lanka are like, we will hit however we want. West Indies were like, yes, we will hit however we want. And the celebration like this, the West Indian, the celebration, it's all fantastic to yes, see. I yes. mean, you don't get that with India. India is more like a professional India. That's what I said. They are unpredictable. Percentage is Yeah. unpredictable. And even Pakistan. You never know which Pakistan will play at which day. Sometimes they will lose to Zimbabwe, and sometimes they will thrash Australia. They're like that. You never Yes. know how they play. As you saw in the Champions Trophy, they'll beat India by 180 runs. That's something which I Which can never was which forget in my was whole. which was completely unexpected. Completely. Yeah. And speaking of Pakistan, I think we have missed. I think we have missed Bangladesh. I feel. Let's move on to the Bangladesh team now. Let's Yes. discuss strong points about them, and then I think within 2 minutes, I think toss is there. So we'll just discuss some basic about them, and then we'll move to the toss update. I think let's do one thing. We will stop the stream. I mean, we'll not stop the stream. We'll stream the toss for 2 minutes, and then we'll just come back Okay. to Of this. course. Of course. Let's uh, get to the toss. Okay, I, so I I'll. just watched Twitter. I just watched Twitter before coming to the podcast. I saw a small clip of Virat. Did you saw it? Okay, Literally, he was giving some reasons for not playing the test match. okay. So people trolled him badly. The Yeah, media that's what I. trolled him. That's what I don't like. I mean, it's his personal. Oh, Australia are batting first. The toss has already happened. Oh, see. Okay, That's so that's the let's. video. That's the video. That's the video at right side in which Virat was playing. Yeah, yeah. So just the match is starting in 9:10. I thought the match is starting at 9:30. Oh, it's starting in few minutes. Okay. So we have like 25 we have like 30 minutes more, I think. Yeah, we can Yes. quickly wrap up, no issues. Yes. Just see the square in the points of both teams. Yeah, yeah, we'll just see the spot. If you look at Australia, they're playing Aaron Finch, David Warner. I mean, their opening is pretty good. And if you look Steve Smith, Labuschagne, they have been fantastic for them. I'm excited to see Smith. So let's look at the pitch report, what they have to say. They are mentioning that it is a high scoring ground. The High average scoring score ground. batting in the last 5 games is 310. You have to post a big score. So they are trying to tell us that defending is going to be very difficult. They're telling that.
I'll just Hmm. I'll just quickly give you the update with the phone. I'll just quickly give you the update with the phone. Let's just quickly give you the update with the phone. Here we will, because I want to see what Virat Kohli talks about the team. Let's just quickly hear that. Okay, so Yeah, the just right side it is. The right side the video is there. so today Virender Sehwag has come to the भी show. उसको स्टिक करेंगे क्योंकि ऐसा हमने देखा विराट कोहली जनरली ऐसा ही करते हैं कि ज्यादातर खिलाड़ी को वो उतना ही मौके देते हैं जब तक वो चलते रहते हैं, जब वो नहीं चलते हैं तब उनको चेंज करने की बातें सोचते हैं। तो ये अगर उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे, या तो जब तक रोहित शर्मा ओपनिंग करने दोबारा नहीं आते तब तक ही मयंक अग्रवाल करेंगे। अगर उन्होंने नटराजन डेब्यू कर रहा है, नटराजन देखा आज ऑडियो T20 है। ओडे ओडे नटराजन डेब्यू कल बोला ना सैनी इंजर्ड हो गया। एरन फिंच है और जो भी इस अच्छा ऑस्ट्रेलिया की 11 को देख रहा है वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बैलेंस्ड 11 है, लेकिन इस 11 में एक खिलाड़ी अच्छा ये लोग खेल नहीं रहे, सॉरी सॉरी, मनीष पांडे, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, नटराजन और संजू सैमसन नहीं खेलने वाले। उन्होंने बुलाया था 10 करोड़ का चीयरलीडर, लेकिन इंडिया का स्क्वाड दिखा रहा। Vicky called me a cheerleader actually. मुझे तेरे लगता है मैक्सवेल का रिप्लाई, cheerleader कहा। सेवा का रिप्लाई तेरे। मुझे पता है कि वीरू मुझे पसंद नहीं करते, ये भी ठीक है। जो वो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वो मीडिया में ऐसी बातें कहने के लिए जाने जाते हैं, ये भी चलेगा। लेकिन मैं ऐसी चीजों को सुनकर आगे बढ़ने में यकीन रखता हूँ। Take with a grain of salt with Sehwag. वीरू भाई, मतलब मैं रिएक्ट करूँ? मैं कैसे रिएक्ट करूँ सर? मैं देखिए वो एक बात इंडिया का स्क्वाड दिखा स्ट्रीम पे। ये देख इंडिया का प्लेइंग 11 आ गया। हाँ वही बोल रहा था। यही प्लेइंग 11 अपन को एक्सपेक्ट करना है, वही प्लेइंग 11 जो अपन एक्सपेक्ट कर रहा था ना, प्लेइंग 11 वही है। यस, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सही सही है ना। हाँ सही नहीं है ना, सही नहीं, मतलब उस उन लोग को एक्चुअली बैकअप के लिए रखा है नटराजन को। समझा? अय्यर राहुल, राहुल कौन से नंबर पे? राहुल आगे 5 पे खेलेगा और विकेट कीपिंग करेगा राहुल। आई थिंक जडेजा और हार्दिक पांड्या को लेने का मेन रीजन क्या पता है क्या, उन लोग को लग रहा है फिनिशिंग में अपने साथ अभी अभी कोई प्लेयर है नहीं, तो इसके लिए फिनिशिंग वो बराबर लोग दोनों को रखा है। समझा? हाँ मेरा बस इधर एक ही इशू है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है ना, मेरा बस एक ही इशू है कि अगर वो बॉलिंग अगर वो कर नहीं पाएगा बॉलिंग, तो अपने को इशू होने वाला है बहुत। अगर समझ किसी एक बॉलर का खराब दिन गया, वी आर इन फॉर ह्यूज तो ट्रबल। पांड्या एज अ सिक्स बॉलर है ना पांड्या तो। लेकिन बॉल बॉल कहाँ डाला उसने, पूरा आईपीएल में एक भी बॉल नहीं डाला उसने, उसका नहीं और उसने डाला भी कहाँ कहाँ डाला है हार्दिक ने। नहीं डाला नहीं, लेकिन मतलब उसका इंजरी रीजन था क्या उसका? हाँ अगर वो बॉल डालेगा तो ठीक है, फिर मैं ये टीम से हैप्पी हूँ। बस मेरे को वो एक का ही डर है, बाकी सब मेरे को परफेक्ट है टीम, बाकी पूरा परफेक्ट टीम है। ओके अगर सारे बॉलर लोग ने अच्छा डाल दिया तो कोई टेंशन नहीं। अपन सोच रहे कि किसी, क्योंकि देख धोनी हमेशा छठवां बॉलर लेके चलता था अपनी टीम में, तो उसको मालूम था कोई ना कोई बॉलर का दिन खराब हो सकता है। इधर एक छठवां बॉलर नहीं, वो एक ही थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक है। अपने पास ये इसके पास अपने पास ये ऑस्ट्रेलिया के पास भी छठा बॉलर है है ना? स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस नंबर 6 पे खेलेगा, मैक्सवेल तेरा 7 पे खेलेगा, हो गया ना, दोनों मिलकर 10 डाल देंगे। ओए अपने पास ऐसा नहीं है ना, और वो दोनों हिटर भी है। अपने पास भी अगर हार्दिक डालता ना, अपना भी बैलेंस बराबर था। हार्दिक 5-6 ओवर डालता, जडेजा 5-6 ओवर डाल देता, क्या फर्क पड़ता है? और मैच जडेजा अब देखना पड़ेगा 5-6, मैच में। हाँ मेन तो मैच में देखना पड़ेगा हारी डालता है नहीं डालता। हाँ, पर मेरे ख्याल से जडेजा के बाद ना, अगर आज पिच में देखो जडेजा से टर्न अगर मिलेगा ना, if we get some turn on the pitch, then I think India will manage without Hardik Pandya. समझा? ओके ओके देखो अगर अगर कभी इंडिया का विकेट जा रहा है तो मेरे हिसाब से जडेजा के बाद सैनी को लाना चाहिए बैटिंग में। जडेजा की जगह पे, जडेजा के बाद अगर हाँ उसके बाद भी विकेट अगर जाता है तो सैनी को लाना चाहिए बैटिंग हाँ में। सही नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर शार्दुल ठाकुर होता तो शार्दुल ठाकुर खेलता, वरना क्योंकि सही नहीं शमी बेस्ट। चहल तो अपन ने देखा आईपीएल में बैटिंग उसका। कुछ लोग का ये भी मानना था, कुछ लोग का, कि अगर रविंद्र जडेजा नंबर 6 पे खेलता, शार्दुल ठाकुर 7 पे खेलता, तो भी अपने 6 बॉलिंग ऑप्शन मिलते। ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे थे कल। अच्छा
बट प्रॉब्लम क्या, फिर आपने उसको फिनिशर होगा ही नहीं ना। एक और मतलब जडेजा मतलब इसका पंड्या का तो रेपुटेशन अलग लेवल का है पंड्या का। वो तो है यार, मिसिंग एमएसडी यार। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग है। क्या तू सरप्राइज नहीं है इस चीज से? मेरे को लगा क्या वो चेस मैच का है? करेंगे। मैच किससे कौन सी कौन ये लोग बोल रहे हैं कि अच्छा, गुड कवरिंग ऑफ ग्रास, इट्स लुक नाइस एंड इवन डोंट डोंट थिंक इट्स अ पिच फॉर थ्री स्पिनर्स। अच्छा, ओके ओके। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन रोहित अवेलेबिलिटी नॉट आइडियल, ये बोल रहा है क्लैरिटी था ही नहीं रोहित के इशू में, तो वो हम लोग को अच्छा नहीं लगा, ऐसा बोल रहा कोहली। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला था। ओके। ओके, कहाँ मैच कहाँ है? मैच आई थिंक सिडनी में, हाँ एससीजी में। यहाँ पे? एससीजी सिडनी सही। क्रिकेट ग्राउंड। और अगर अपन तो सिडनी में और अगर अपन सिडनी में अगर इंडिया का अपन रिकॉर्ड रिकॉर्ड देखे अपन सिडनी में। क्या है? इंडस, इंडस। इंडिया रिकॉर्ड इन सिडनी ओके। देखिएगा ना अगर तू इंडिया का रिकॉर्ड सिडनी में। आई डोंट थिंक इट्स दैट ग्रेट। मैंने सुना है कि इंडिया कुछ 12 या 13 बार हारा ऑस्ट्रेलिया से। तो सिडनी तो मेन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मेन होम ग्राउंड है ना। इतने मैचेस खेले इंडिया ने और जीता कितना है? एक, दो, तीन, चार, खाली 5 मैच जीता है ये पूरे मैच में से। समझा? इसमें कितना और मैच रहेगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 पकड़ ले। मतलब 22 मैचेस में कुछ पांच पांच मैच जीता है इंडिया ने, 5। और एक आके नो रिजल्ट हुआ है। यानी कि इंडिया 16 मैच हारा है सिडनी में। लेकिन अगर रीसेंट रिकॉर्ड में जाएगा ना, रीसेंट रिकॉर्ड में, हाँ, तो इंडिया इंडिया ने लास्ट 4 मैचेस में 2 मैच हारे उसमें भी। और अभी चौथा मैच आज है। तो अच्छा। मतलब दे हैव नॉट बीन एबल टू डोमिनेट दैट मच। उतना लेवल का डोमिनेशन अभी तक कर नहीं पाए वो लोग सिडनी में। समझा? दे स्टिल ओके। स्ट्रगल डोमिनेट। और अभी कुछ समय के बाद न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का भी T20 होगा। आई मीन वो आई थिंक 11 बजे स्टार्ट होगा वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, I'm उसका भी excited स्कोर। to see Agarwal देखिए, opening. How does he open? हाँ I'm मेरे को भी वो excited. देखना है कि अग्रवाल ओपनिंग कर रहा था करके, क्योंकि अग्रवाल, क्योंकि उसने उन लोग ने अगर डिसाइड कर लिया कि अग्रवाल ओपनिंग करने वाला है, तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं। मतलब वो लोग राहुल को एज अ नंबर 5 ही देख रहे हैं, राहुल को लोग। Yeah. तो वो लोग चाहते हैं कि एक सॉलिड विकेट कीपर बैट्समैन ही बैट्समैन उन लोग को चाहिए, मतलब हाँ उन लोग का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हो रहा है ना अभी। दे वांट नंबर हाँ। 5 विकेट कीपर ओनली। दे पंत डोंट नहीं है टीम में, वांट पंत। पंत नहीं है ना पंत नहीं वनडे है में। टीम में। वनडे में तो राहुल ने उसको जगह ले लिया ना भाई, राहुल ने पत्ता काट दिया पंत का। पंत को एक बार सर पे इंजरी हुआ, पंत बाहर हुआ, फिर राहुल विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनने बैठा, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। कभी जगह नहीं मिला फिर पंत को उसके बाद। इसलिए बोलते हैं, कभी अपना जगह किसी और को दिया, फिर से मिलना बहुत मुश्किल है, खासकर स्पोर्ट्स में। जब भाई, MS धोनी आया आया विकेट कीपर बन के, 15 साल तक सबका पत्ता कट गया था ना, कोई नहीं आ पाया वो जगह फिक्स एकदम। क्या बोलते हैं उसको, स्टैंप लग के फिक्स हो गया था वो जगह। आ, नो वन कुड नो वन कुड इवन चैलेंज, कोई चैलेंज भी नहीं कर पा रहा था धोनी को। नहीं नहीं बिल्कुल इट वॉज लाइक जब टीम शीट बनता है ना, टीम शीट विकेट कीपर खत्म, उधर से देखो ही मत, बाकी 10 प्लेयर देखो, ऐसा नहीं। था। वैसा होता था टाइम पे। मतलब उतना ये था लोगों को, मतलब उतना उम्मीद, उतना कॉन्फिडेंस और उसका स्किल उस लेवल का था उस समय, कि वैसा और कोई प्लेयर था ही नहीं पूरे कंट्री में जो उसको रिप्लेस कर सके। बाकी लोग ऐसा बहुत थे जो विकेट कीपिंग अच्छा कर रहे थे बट बैटिंग नहीं कर रहे थे। फिर कुछ ऐसे थे जो बैटिंग अच्छा कर रहे थे बट विकेट कीपिंग बराबर कर नहीं पा रहे थे। वो दोनों का मिक्सचर मिल नहीं पा रहा। अभी राहुल में वो लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं ढूंढने को। राहुल मेरे को लगा धोनी का 50% कर सकते हैं, 50%। और बाकी जो है वो जडेजा पांड्या को करना पड़ेगा फिनिशिंग, मतलब वो सिंगल हैंडली फिनिश नहीं कर सकता जैसा एमेजोन नहीं करता था। वो सपोर्ट ओके। फिनिशिंग कर सकता है, वो बोलते हैं ना सपोर्ट सपोर्ट में फिनिशिंग कर सकता है वो, विथ हाँ। KL, विथ पंड्या एंड जडेजा। समझा? सपोर्ट लगेगा उसको बाकी का। धोनी जैसा अकेला फिनिश नहीं कर सकता है। 34 5 में आके 220 230 नहीं मार सकता वो सेट हो गए। ऐसा मुश्किल है, वैसा प्लेयर नहीं ये, मतलब हाँ ये ऐसा कर सकता है अगर इसके साथ जडेजा और पांड्या अगर रहेगा बैकअप में,
तो ये फिर 220 230 तक लेकर लेके जा सकता है। वैसा वैसा अगर कोई बैकअप में एक रहेगा तो मैच अच्छा तो है। पता है क्या, उसमें भी इंडिया का 500 विकेट डेली चले गया था उसमें। हाँ याद है ना। फिर 29 पांड्या ने बहुत मारा था। फिर चेन्नई में था पांड्या ना, ने सेंचुरी मारा था। चेन्नई पांड्या का मैच। सेंचुरी मारा था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में था शायद ना। पांड्या सेंचुरी मारा था, धोनी सपोर्ट कर रहा था। एज एक्सपेक्टेड को वो बोल रहा था, मैं स्ट्रीम याद है, मैं तो बोल रहा था 1 घंटे के ऊपर ही जाएगा। हाँ, वो तो गया है। और अभी तो अपन पाकिस्तान टीम पे आए भी नहीं। सो मूविंग बैक टू द, सॉरी, फर्स्ट विल लुक टू द बांग्लादेश टीम। पहले उनके अभी इतना उनकी जल्दी तरफ। करता है, अभी तक मैच शुरू होने में मेरे को एक्साइटिंग हो रहा है। हाँ हाँ, मेरे को लगा नहीं था मैच इतना जल्दी शुरू रहेगा। मेरे को लगा थोड़ा टाइम है, मैं 9:30 सोच के कर रहा था। ठीक है, एक क्विक क्विक रैप कर देते हैं फटाफट। हम्म, ओके, सो वी हैव लाइक 15-14 मिनट्स टू गो इन द स्ट्रीम। मतलब 1.5 घंटा समझ ले, और 14 मिनट में 1.5 घंटा हो जाएगा। ओके। तो बांग्लादेश भी 79 पे अपना आईसीसी ट्रॉफी खेल रहा था। और ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में फुटबॉल आके बहुत पॉपुलर स्पोर्ट था 1990s तक। अभी भी है समझा। मैच में। हाँ, और फिर क्योंकि बांग्लादेश देख ले, वेस्ट बंगाल देख ले, उधर से फुटबॉल ही चलता है मैंने सुना ज्यादा। उनका हाँ हिस्ट्री हाँ, देखो। हिस्ट्री इनफैक्ट मनोज तिवारी, गांगुली गांगुली, ये लोग सब है ना जो बंगाल से आए प्लेयर लोग, हाँ। वो वही बोलते हैं, हम लोग बचपन में दोनों स्पोर्ट खेलते थे। आधा टाइम फुटबॉल खेलते थे, आधा टाइम क्रिकेट खेलते थे। हम्म, बारिश में फुटबॉल, समर में क्रिकेट, ऐसा था वो लोग। तो लोग, लेकिन उन लोगों को उसमें उससे फायदा भी मिला ना बहुत। फिटनेस वगैरह बहुत अच्छा था वो सब प्लेयर्स का। वो तो रनिंग वगैरह बहुत अच्छा था। और ऐसा नहीं था कि क्रिकेट बहुत बेकार खेला था, ऐसा भी नहीं था। ऐसा होता है ना कुछ कुछ लोगों का कि एक स्पोर्ट खेला तो दूसरा स्पोर्ट में इफेक्ट होता है, उनको ऐसा नहीं होता था। हाँ, इंग्लैंड में भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे जो मैनचेस्टर वगैरह में खेलते हैं फुटबॉल क्लब में, उन लोग ने भी क्रिकेट खेला है डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास वगैरह। फिल नेविल एक है, फिल नेविल नाम का एक प्लेयर है, पॉल स्कोल्स का एक प्लेयर है, ये लोग सब डोमेस्टिक में क्रिकेट खेले हैं इंग्लैंड के लिए, बट बाद में वो लोग फुटबॉल में चले गए खेलने को। मोइन अली भी फुटबॉल वगैरह खेलता है, मोइन अली। हाँ, खेलते सब सब खेलते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में तो फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है कि जो इग्नोर नहीं कर सकता, ऐसा स्पोर्ट है, खेलना ही है तुमको फुटबॉल। अपने और तेरे को सब मालूम होता है। साउथ अफ्रीका की एबीडी करेगी। हम्म। अब अगर हम बांग्लादेश के स्टैट्स में जाए, ठीक है, ये लोग फुल मेंबर बने 1970, सॉरी 2000 में बने फुल मेंबर। और ये लोग ने पहला टेस्ट मैच खेला इंडिया के सामने ओके। 2000। अच्छा खेले काफी, लेकिन लास्ट में वो लोग हार गए अनफॉर्चुनेटली। और ये टीम ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में तो बहुत हारता था मैच, अभी भी हारता ही है, ऐसा कुछ ज्यादा खतरनाक टीम नहीं हुआ है, बट एक वैसा टीम हो गया है जिसको अपन आंख बंद करके बोल नहीं सकते कि इंडिया मतलब कोई भी टीम जीतने ही वाला है इनके सामने। हाँ, और ये लोग वनडे में भी काफी अच्छी टीम हो गई, अभी 124 मैच ये लोग विन कर चुके हैं अभी। समझा, 367 में 124 विन कर चुके, विच इज नॉट बैड। आई मीन इट्स लाइक 30% विन रेशियो है लोग अभी। हाँ, ये लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट, है ना। तो दैट्स ऑलरेडी अ सही। पॉजिटिव टास्क। और इन लोग ने वर्ल्ड कप में काफी अच्छा खेला 2007 में, तो याद ही रहेगा, इंडिया को हराया था इन लोग ने, इंडिया का होप पूरा हाँ, शैटर उस वर्ल्ड कप में। बेचारा गांगुली, द्रविड़, सबका सपना इसने ब्रेक किया लास्ट वर्ल्ड कप में। और द्रविड़ का वो चेहरा थोड़ा सा मेरे को ये लगा, मतलब इट वॉज नॉट बैर, इट वॉज अनबेरेबल सीन टू सी द्रविड़। आई मीन वो एक जेंटलमैन है, प्योर जेंटलमैन है गेम का। क्योंकि द्रविड़ ने ऐसे ऐसे मैच अपने को विन करा के दिया ना टेस्ट मैचेस में, उसको मैं चाहता था कि एक वर्ल्ड कप वो जीत के जाए कैसे भी। बट स्टिल इट्स ओके दैट एटलीस्ट उसके कोचिंग में इंडिया एक जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप, द्रविड़ के कोचिंग में। सही। 2018 में शायद जीता इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक भी मैच नहीं आ रहा था। और बांग्लादेश का अगर तो देखिएगा, बेस्ट मोमेंट तो वही था 2000, क्या बोलते हैं अपने को, 2007 में, जिसमें उन्होंने 7 डोमिनेट, वो लोग ने इस वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, ठीक है। और उस वर्ल्ड कप में एक और टीम था आयरलैंड, जिसने पाकिस्तान को भी हराया है। उसी दिन दोपहर को पाकिस्तान आयरलैंड से हरा, उसी दिन शाम को इंडिया बांग्लादेश से हरा। तो दोनों भाई भाई एक ही दिन बाहर हो गए। और उधर ही 50% रेवेन्यू गया आईसीसी का, 50% पैसे का लॉस हो गया, क्योंकि 90% लोग इंडिया पाकिस्तान मैच देखते, वो लोग बंद कर दिए। वो वर्ल्ड कप फ्लॉप हो गया। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया।
वो लोग ने 7 मैचेस की लीग स्टेज बना दी, ताकि अगर एक एक मैच ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कोई टीम को फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा टीम सामने है, क्योंकि क्योंकि अपने को क्या चाहिए वर्ल्ड कप में, अच्छा टीम खेलना चाहिए ना ज्यादातर जितना हो सके। अभी एक आध मैच तो कोई भी टीम हार सकता है वर्ल्ड कप में, दैट डज नॉट मीन दैट कि वो टीम बेकार टीम हो गया है ना। हम्म, तो इट वाज लाइक दैट फॉर बांग्लादेश। और उन लोग ने अभी रिसेंटली इंडिया को इसमें हराया था, अपना क्या बोलते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में हराया था 2020 में, जिसमें वो लोग एकदम नाच नाच रहे थे, फाइट वाइट करने आ गए थे इंडिया के साथ में। हम्म, बट एक और मोमेंट था वो लोग का 2015 में, जब वो लोग ने इंग्लैंड को हराया था, क्वार्टर फाइनल्स में हराया था, जिससे सॉरी लीग स्टेज में हराया था, जिससे इंग्लैंड बाहर हो गया। और उस लॉस ने मॉर्गन को ऐसा बदल बदल दिया, ऐसा बदल दिया। उसने बोला सब टेस्ट प्लेयर हट जाओ मेरी टीम से, तुम्हारा शक्ल देखना ही नहीं मुझको, सबको भगाया था उसने टीम से। कुक हट गया, रूट तो थे, कुक हट गया, ट्रॉट हट गया, बेल हट गया, ब्रॉड हट गया, एंडरसन हट गया, सब हट गए। फिन फिन हट गया, वोक्स हट गया। वोक्स तो खेलता था फिर बीच बीच में, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 प्लेयर को उसने हटा दिया। और उसने बोला जो भी बंदा मेरी टीम में खेलेगा उसको एक मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्राइक रेट चाहिए, और जो भी बंदा बॉलिंग करेगा उसको मिनिमम लेवल ऑफ बैटिंग आना ही चाहिए। हर प्लेयर को 15 बॉल में 30 रन मारने को आना ही चाहिए। हम्म, आर्चर सीखा बैटिंग उस चीज की वजह से, उस चीज की वजह से वोक्स बैटिंग सीखा, उस चीज की वजह से टॉम करन आया सर्किट में, शाम सैम के करन आया। तो ऐसा उन लोग में ऐसा बहुत सारे प्लेयर है जो दोनों काम कर सके। आदिल रशीद बैटिंग बॉलिंग, मोइन अली बैटिंग बॉलिंग, डेविड विली बैटिंग बॉलिंग, मार्क वुड बैटिंग हम्म, बॉलिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन, लियम प्लंकेट, मतलब इतने सारे प्लेयर्स थे उनके बैटिंग बॉलिंग के लिए। और हाँ, बांग्लादेश ने भी केन्या के जैसी अपने पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपसेट किया था 1999 पे। ओके, और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, फाइनल तक गया था। ओके। बट वो लोग बट वो लोग इंडिया से भी हार गए थे, और बांग्लादेश से, दोनों से हार गए थे पाकिस्तान। We have only 8 matches remaining, bro. First, come to Pakistan first. या सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम व्हिच इज पाकिस्तान। मुझे लगता नहीं 8 मिनट काफी होगा पाकिस्तान के लिए। एक्चुअली डिस्कशन ऐसा है ना अपना, अपन कोई भी एक पर्टिकुलर टीम के बारे में अपन ज्यादा बात कर सकते हैं, ऐसा मतलब ओवरऑल बात करना बहुत डिफिकल्ट। मेरे को पहले लग रहा था कि अपन मैनेज कर सकते हैं। अपने को लगा कि 9:30 को टॉस है ना, 9:30 का मैच हाँ, हुआ। हाँ, मैं भी वो सोच सोच के मैंने ये किया था। एनीवेज इट्स बीन गुड सो फार। ये अपना Yes. एक ट्राई, अच्छा ट्राई था फिर भी अभी तक, बहुत सारा इसमें डिस्कस किया अपन ने। And और I, अभी I pranked you, and even I pranked you at start. प्लान टू, Pranked. हाँ, तो बहुत सारे हर्डल्स लेके आया तू बीच बीच में, तूने बहुत सारे ऑब्स्टेकल डालने को ट्राई किया, बीच बीच में ब्रेक लिया तूने स्ट्रीम से वो भागा तू। नहीं, वो पॉडकास्ट से पहले पहले हाँ, जो मैं प्रैंक बोल किया रहा था हूँ ना। बहुत सारे हर्डल्स ट्राई किया तूने करने को, ऑब्स्टेकल डाला तूने बीच बीच में, पॉडकास्ट के पहले, पॉडकास्ट के बीच में बीच में तो वो मेरे हाथ में नहीं था, वो तो अपना वो रहा। हाँ। और पाकिस्तान का तो ओके। क्या ही बात करें। पाकिस्तान एक ऐसा टीम था शुरुआत में वर्ल्ड कप्स में, हमेशा टफ टफ एक टीम था। वेस्ट इंडीज जो है ना, वेस्ट इंडीज, हाँ। उनको सबसे ज्यादा डर ये टीम से लगता था वो टाइम पे, ओके। क्योंकि पाकिस्तान वाज अनप्रिडिक्टेबल। यू डोंट नो विच पाकिस्तान वुड प्ले ऑन विच डे। हम्म, और उन लोग स्टार्टिंग के दोनों वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक आ गए थे, 75 में, 79 में, 83 में, 87 में, चारों बार आए थे। ओके। बट वो लोग जीते सिर्फ 1992 में 5वें अटेम्प्ट पे जीते वो लोग, Yeah. समझा। Under the दे captaincy of one of the greatest captain of the world. यस, और तो ऑब्जर्व कर, जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतता है उनके कैप्टन में कुछ ना कुछ स्पेशल बात होता है, कभी भी ऑब्जर्व करके देख, ऐसा कोई नॉर्मल कैप्टन जीता नहीं पाता, कोई स्पेशल चीज चाहिए उसके अंदर जीतने के लिए। मैं नहीं वो बोल रहा तो हूँ है। विराट कोहली चीज नहीं है, बट नहीं है, वैसा जो नहीं बोला, मतलब जो भी जीता है। जो जो धोनी में था, एक वो ब्रेव चीज करना, जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल में युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज रहा, उसके पहले उतरना, उस टाइप वो वैसी है। समझ ली। इमरान खान वर्ल्ड कप में नंबर 3 पे आ रहा है, वो नॉर्मली नंबर 5 या नंबर 6 पे आता था, अगर अगर फाइनल में अपन नंबर पे 3 रहते पे थे, आया। अपन पे रहते अपना पूरा टूर्नामेंट खेलना है, तो अपन हम्म, पीछे होते थे। अपन बोलते थे चल पर जो अगर फॉर्म में चल रहा है उसको जान दे, अपन ऐसा बोलते थे। हाँ, अपन फाइनल मैच में रिस्क लेते ही नहीं थे। लेकिन धोनी ने क्या सोचा, यही टाइम है अपना लेगेसी क्रिएट करने का, ये मोमेंट अगर मैं चल गया तो मैं जिंदगी भर लोग मेरे को याद रखेंगे, समझा।
तो धोनी ने नहीं, उसको और ऐसा फाइनल पॉजिटिव मैच लिया। में अपन रिस्क लेते नहीं अपन। भाई लेकिन वर्ल्ड कप उसने का सवाल है, पॉजिटिव लिया। रिस्क क्यों लेना। डिफरेंस क्या, उसने इसको हम्म। इसको आगे पॉजिटिवली लिया, पॉजिटिवली। वही। और पाकिस्तान एज यूजुअल हमेशा एक बोलते हैं ना, एक वैसा टीम रहा है जो इंडिया को बहुत धोया है शुरुआत में शारजा में। और अभी भी देखिएगा उन लोग का विन ज्यादा है इंडिया से, मतलब उन लोग का 74 हम्म। विन है, इंडिया का सिर्फ 54 53 54 है आई थिंक इंडिया का। अभी भी वो लोग इंडिया से आगे हेड टू हेड में। और उन लोग ही बट वो एक ऐसी टीम था जिसने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 1999 में हराया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार कुछ 28 से 30 मैच जीता, लगातार 3 वर्ल्ड कप में। फिर 2011 में फिर से वो लोग ने वो ब्रेक किया, पाकिस्तान ने उन लोग को हरा के। ओके। तो फिर वो वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर बाद में इंडिया आया क्वार्टर फाइनल्स में, फिर इंडिया ने भी उन और लोग को हरा दिया। 2011 में तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था। साउथ अफ्रीका जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गया था। नहीं, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान हराया था एकदम। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2015 में हराया था। 11 में मैच नहीं हुआ था आपस में। नहीं, 11 में उमर गुल जो 11 जो उमर गुल जिसमें खेला, में उमर गुल खेला था ना जिसमें उमर गुल, उसने हाँ। मारा था। अच्छा, वो तू टी 2011 था। ट्वेंटी का बोल रहा है, तू टी ट्वेंटी में मारा था उसे। ओडीआई में तो मारा था ना। वनडे वर्ल्ड कप मैच ही नहीं हुआ। ओडीआई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका 2011 में मैच नहीं हुआ था। पक्का। हाँ, क्योंकि वो ग्रुप में था ही नहीं वो लोग। पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में था। हो सकता नहीं है, ठीक है। 2012 में एक मैच हुआ था उमर गुल ने जिसमें मारा था, खतरनाक वाला। हाँ, एकदम एकदम टफ, मतलब सीरियस मैच था एकदम। हाँ, वो टी ट्वेंटी में मारा था उसने 2012 में। अच्छा अच्छा, तब टी उसने ट्वेंटी होगा खतरनाक था। बैट किया। तो ये था इसका। अब एक फास्ट एक स्टैट देख लेते 2 मिनट में। वो अभी ओवरऑल स्टैट्स में बात करते हैं, बाकी जो 3 टीम्स है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का अपन बाद में करते। डायरेक्ट तेरे को इसका बताता हूँ पहले। या अपन ब्रॉडकास्ट वैसे भी अपन वीक टीम्स के लिए किए थे ना। हाँ। वो मोस्टली फॉर वीक टीम्स के लिए था, डेडिकेटेड था ये ब्रॉडकास्ट। हाँ, वो तो है। मतलब वो उस टाइम का जो, क्या बोलते हैं उस चीज को, उस टाइम का जो एक्साइटमेंट था गेम में, उस चीज को डिस्कस करने के लिए था ये। हम्म। रिलीज ओके, स्टार्ट था और 2 मिनट में मैच स्टार्ट हुआ था। नेशनल एंथम चालू हो रहा है, तो नेशनल एंथम सुन लेते हैं, फिर अपन जाते। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ कदम विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तिरंगा, कब शुभ नाम जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 सोच, ऑडियंस भी ऑडियंस ऑडियंस भी अवेलेबल रहेगा मैच में, इसीलिए काफी एक रोमांचक रहेगा मैच। सो हम्म। इट वाज अ रियली फैंटास्टिक पॉडकास्ट। आई मीन जितना भी बिग टीम्स का अपन ने बात किया, इसीलिए अपना मेन मकसद तो वही था इस पॉडकास्ट में। जिम्बाब्वे, केन्या, श्रीलंका, ये वगैरह बात करना। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज का भी आपने ब्रीफ में आपने मेंशन किया था उन लोग का भी। ऐसे नहीं कि आपने मिस कर दिया, उन लोग का भी अपन मेंशन कर रहे थे बीच बीच में। हाँ। सो आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा था अपना डिस्कशन। यस। इट वाज क्वाइट गुड। और फिर वाईफाई में तू आया तो वो भी थोड़ा अच्छा अच्छा था, मतलब पॉडकास्ट में उसने भी थोड़ा एक्साइटमेंट भर दिया, फिर थोड़ा स्मूथनेस मिला अपने को। हम्म। एक क्विक स्कोर बोल दे कि कितना मार रहा है ऑस्ट्रेलिया। मैं बोलता हूँ 315। 315। हाँ, मैं यहाँ पे स्कोर लिख रहा हूँ आपको इधर साइड। इंडियन हाँ बॉलिंग में इधर कॉन्फिडेंस नहीं आपको? है, बट वो फिंच बोल रहा था ना पिच में कि मतलब 315 बनने का चांस ज्यादा है इधर। 320 का पिच लग रहा है, ऐसा बोल रहा था। वो तो मैं मैं बोलता हूँ 290। 290 ठीक है, चलेगा।
ठीक है, ये अपन पॉडकास्ट में बाद में मैं चेक करूँ तो मालूम पड़ जाएगा मेरे को किसका सही आता है। एनीवेज, ओके, Okay. चल मैं बोलता हूँ लास्ट ना। इंडिया विन बाय 5 विकेट्स मैं बोल रहा हूँ। Maybe India can win by 5 wickets. फाइव No, विकेट्स ही, 4 wickets. 6, 4 विकेट्स। 4 wickets. ओके, चलो ओके, ठीक है दैट्स फिर। okay. So it's been an absolute pleasure to be in this podcast. It's been fantastic. It's a wonderful experience and really great that you really agreed to this idea. Initially, I was a bit skeptical whether you would like this idea or not, but you showed great response. Yes, sir. How can disagree with you? So it was really wonderful discussing the great moments of cricket about all the old teams which used to play. It really refreshed. I just felt like I was in a ride, roller coaster ride. I went all the way back. It was really fantastic experience. Uh, we just we just were a roller coaster time machine. Yeah, yeah. It felt like we went in a time machine with the Doraemon gadget, and we are just like watching that match only. It felt like that way. Yes. So the Indian team are, as you can see, the Indian team are out on the park now. So Okay. so the match has started. So really, So, thank you for the podcast. We'll just leave now. yeah, yeah. Thank you for adding me in the podcast. Yeah, yeah. Thanks a lot. You're most welcome. See you. See ya. Bye.